Unacademy. Let's crack it. Hello students, welcome to the class. So this is a special class on optionals for UPSC CSC, and in this special class on optionals we will be discussing about the importance of optionals, which optional one should select, how to go for optionals preparation, and what is the importance of optionals in overall UPSC preparation. And for discussion on all these aspects of optionals, today we have Himabindu Mam with us, and she's a well-known educator of Anthropology Optional. And I'm G Rajput, and I teach Public Administration Optional on Unacademy. Ma'am, welcome to the session. Thank you, sir. Hello, friends. Let us have a detailed discussion about how to choose the optionals and the best time to start the optional preparation and all. So let us proceed with the class, sir. Yes, ma'am. मैम जनरली स्टूडेंट्स को ये रहता है कि दैट आई शुड स्टार्ट माय प्रिपरेशन विद जीएस, तो मुझे जनरल स्टडीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, एंड स्टूडेंट्स 7-8 महीने लगा देते हैं बिफोर स्टार्टिंग देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट. तो व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि इतना ज्यादा डिले होना चाहिए कि मतलब स्टूडेंट्स को पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए? व्हाट इज योर टेक? फिर मैं अपने बारे में बता दूंगा मेरा क्या ओपिनियन है. Yes, sir. Sir, in my opinion, optional preparation should be done in the moment they start the preparation. Like say they can start it even when they are in their graduation, because like among all the papers in UPSC, optional is the most static paper. Of course, I agree that different optionals have different nature. Some optionals are more dynamic and some optionals are more static, but even the most dynamic optional is static when compared to a GS paper. So for GS preparation, let it be prelims or mains, they need to do more current affairs related concepts, and the information keeps changing. So what they studied today will become irrelevant after 2 years when they finally write the exam. So Obviously. In my opinion, the best thing is to start the preparation with the optional, sir. Yes, ma'am. Ma'am, I agree with what you are saying, and I personally believe if a student can master the optional subject well, he becomes a serious aspirant for UPSC, this entire journey of UPSC preparation. Because once your optional is completed, you get more committed to the preparation. You know about 500 marks is already taken care of, and this is something, the mastery of the optional subject is something that you can do after doing at least 2 to 3 to 4 revisions. And because of that, I think one should start optional subject in the starting days of preparation itself. But ma'am, what I come across with a query from the students is with respect to how to select optional subject, because in the beginning stage of preparation, when they are beginners in the preparation, they are actually not sure about which optionals to choose, and which optional they should choose and they should not choose. And what is your take with respect to this thing? What is the right strategy to select the optional subject? Sir, what I feel is like if we have a subject in our degree background, like if you have done degree in one particular subject which is suitable, that can be taken. But like I don't feel one should definitely have a graduation background in the optional they choose. Like say for example, if you come to my optional, that is anthropology, all the top 10 rankers in the last 1 or 2 decades, there have been so many students who got ranks in the top 10 from anthropology. Interestingly, most of them are engineering graduates, and anthropology have nothing to do with engineering. Okay, and even one student scored 362 marks. That is the highest marks ever in optional, not only in anthropology optional. And she has nothing to do with anthropology background. She's purely from, I think, engineering background. So there is no rule that the optional should be in our degree background. Second thing is, some people like rankers or seniors advise the students to take the subject which they have interest in. But I believe when we get fever, we should take medicine only, not some chocolate. It doesn't go with interest.
So the point is we have to keep in mind what kind of guidance we are getting and what kind of material is available, how the optional is doing in the recent times, and how scoring is it. Is it more dynamic or static? How vast the syllabus is? How clearly the syllabus is defined? I feel these are a few criteria, sir. I hope you will throw some light on these aspects. Ma'am, like I personally believe, like these days, the scope and the syllabus of general studies, it has increased tremendously, Yes, and because of the increase in the syllabus of general studies, I believe a student should go for the optional subject that have a shorter syllabus. And I think anthropology and public administration, and for that matter sociology and philosophy, I believe are the optional subjects that have a shorter syllabus. और इन सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट्स जल्दी भी कर सकता है, कवर जल्दी कर सकता है, क्योंकि वो उसको जनरल स्टडीज को भी बाद में टाइम डिवोट करना है. तो आई थिंक जो बड़े ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, तो मुझे लग रहा है वो आज की डेट में थोड़ा उनका सिलेक्शन भी थोड़ा कम हो रहा है. जैसे आपने बताया एंथ्रोपोलॉजी में अच्छे सिलेक्शन हो रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप देखेंगे ऑल इंडिया रैंक 1 रहे हैं प्रदीप कुमार. एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपको और भी जगह पे बेनिफिट हो जाता है, जनरल स्टडीज में भी बेनिफिट हो जाता है, पॉलिटी में, गवर्नेंस में, एथिक्स में ओवरलैपिंग है. Particularly last 3-4 years, public administration again started doing very well. It has again started doing well. So, ma'am, another query, मतलब from students' point of view, is with respect to starting optional, मतलब optional subject जो है, should there should be concurrent preparation of the optional subject with the GS, or one should go for the optional subject and then one should start for the general studies. What is your take on that? Sir, doing simultaneously will help, but in order, doing simultaneously does not mean starting on the same date. So they can start optional preparation a few days or 1 or 2 months in advance, or if they are nowadays, the students have also become smart, they started preparation some 3-4 years earlier itself. I in general feel that after completing graduation, if we keep 1 or 2 years target and we try for the exam, it may come, may not come. Of course, there is a chance of getting selected, but if you have a prior plan, I believe when you are in the first year of degree, make some preparations for it if you are in the journey. So I think you can even count your chicken before the hatch. That is, you can even make sure of the selection. That is in my opinion. So like that, if you have a pre-planned journey, and if you start, the students start the preparation in the first year, second year of graduation, they can start with optional, keep it aside, and then proceed with GS, and then again pick up optional after some time when they start feeling comfortable with GS preparations. So that is... Ma'am, you are right. You are right. Ma'am, these days, what I am observing is that students, they tend to play more importance to general studies. They focus more on polity, they focus more on history, geography, and they tend not to focus more on the optional subjects. And this is leading to a problem where the students is not getting a complete grasp over the preparation of UPSC. And मेरा यही students को कहना है कि अगर आप preparation कर रहे हैं, एंड आई थिंक ऑप्शनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑप्शनल्स कॉन्स्टिट्यूट 500 मार्क्स, बहुत बड़ा चंक है. और ऑप्शनल की प्रिपरेशन अगर आप पहले स्टार्ट करते हैं, राइट टाइम पे करते हैं, तो आप एक सीरियस एस्पायरेंट बन सकते हैं, एंड आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. बिकॉज दीज डेज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज मोस्ट ऑफ द टॉपर्स इन द यूपीएससी, उनका ऑप्शनल्स के ऊपर बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, एंड द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन द ऑप्शनल, उनका सिलेक्शन होते ही नहीं है. Because GS in mains cannot help you to get good rank, because it is the optional only that will help you to get good rank. So my advice to the students is to start the optional in the beginning stages of the preparation itself, and don't procrastinate and don't delay in selecting the optional. Select the optional subject that is short, and select the optional subject that is overlapping with the general studies. Yes. Ma'am, there is one aspect that is very important, is revision in UPSC preparation. And when it comes to the optional subject, specifically with respect to anthropology,
for how many times the optional should actually be revised so that the student can score around 300 marks? Sir, definitely in anthropology, PubAd, such partly technical subjects where the information is standard, scoring 300 plus is quite possible. And like the students, what they can do is they can check the marks sheet of so many selected candidates. And by themselves they can easily understand out of analysis. If they just check the marks list of a few selected candidates, probably some 10 to 20 marks lists, if they can search, it is very evident that major chunk of the marks they are getting are from optional. Right? Not only that, the optionals contributes to some 500 marks, that is important, but on the top of it, in the total marks they are getting, optional marks are contributing to the major proportion of the marks. So that is one thing the students can analyze by themselves, because yes, like out of 500, if 500 marks is for the optional, then the optional students end up scoring around 300 marks. And that makes around 70%, 65-70% of the marks. And I think when it comes to general studies, and out of 100,000 marks, students का जो स्कोर है वो 400 के आसपास ही रुक जाता है आके. जीएस में आप सिर्फ 40% स्कोर करते हैं और यहाँ पे आप 65-70% को भी टच कर सकते हैं. 60 तो आ ही जाता है. And that one, I want the students to come to a conclusion by themselves by analyzing the mark sheets of the selected candidates. This is one thing. And coming to the exact question that you asked, that is like to score 300 plus, how many times we have to revise? So it's not like the number of times you read, like the student reads it 20 times also useless, that is volatile. So as long as we don't keep it on the paper, we are not sure how much we are thorough about it. So I feel answer writing practice is the game changer, because like I have seen many rankers, and what they said is invariably about the answer writing practice. So kind of I know a student personally, and he used to write every question daily, like for 365 days. Without fail, every day he wrote a test, and he says that is the reason for his success. So there are many students like that. So yes, we have to revise, we have to read it once, and instead of doing revision in a volatile manner, like reading it 10 times, 20 times without developing any kind of confidence on it, like feel free to first keep it on the paper. And I noticed that many students have hesitation of keeping it on the paper. Psychologically they feel, what the evaluator will think about me. Who is evaluator to you? Whatever he thinks, he's just nobody to you. So let him judge you, no problem. And they have a fear of self-judgment also, like I will write the answer, what if I'm not satisfied with me, then I will get disappointed, so I'll wait for some more time. No, start writing it. Okay, so like your 10th question will be good, your 20th question will be good. Okay, so don't get afraid of somebody judging your answers, and don't get afraid of a self-judgment about your own answer. Start writing it, and writing is the best form of revision, I believe, because yes. And same goes with the public administration also. Like from जब भी बैच स्टार्ट होता है, from day one I start asking students to write answers, because without practicing answer writing, I think one will not be able to master the subject. तो जितने भी students अभी ऑप्शनल लेने के बारे में सोच रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी लेंगे या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे, तो मैम भी बता रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में भी आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आंसर राइटिंग करना पड़ेगा. तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो जस्ट फोकस ऑन आंसर राइटिंग. तो आंसर राइटिंग को एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जरूर बनाइए. एंड ऐसा मत सोचिए कि आपने कोई बुरा आंसर लिख लिया है. बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर डर लगता है लिखने में, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है. तो हम बताते हैं कि आप प्रीवियस ईयर के आंसर्स पढ़ लीजिए, टॉपर्स के आंसर्स भी रीड कर लीजिए, तो उनका क्या लेवल है, जो आप आंसर्स रीड कर रहे हैं उनका क्या लेवल है, आपका क्या लेवल है. धीरे 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 डेवलप हो जाएगा. 200, 300, 400 आंसर जरूर लिखिए. मैम का भी यही एक्सपीरियंस है जो उन्होंने बताया है कि 365 डेज एक कैंडिडेट ने आंसर लिखा है एंथ्रोपोलॉजी का.
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी अभिनंदन कुमार थे, ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आया उनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे बैच से। एंड वो भी बहुत सारे आंसर लिखते थे, बहुत सारे टेस्ट देते थे, तो वही सिमिलर चीजें हैं। सो यू नीड टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ आंसर राइटिंग, एंड मुझे लगता है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, अनअकैडमी बहुत सारे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, चाहे एंथ्रोपोलॉजी से करे चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से करे, बट द बेसिक थिंग इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड मल्टीपल टाइम आप आंसर्स को लिखिए, जरूरी है, एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस जरूर करिए, बिकॉज दैट विल गिव यू सम अमाउंट ऑफ आइडिया कि किस तरह का यूपीएससी पेपर पूछता है। अगर आपने पिछले 10 सालों का पेपर एनालाइज कर लिया तो उसके मतलब बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं होगा, 100% डेविएशन किसी भी साल में नहीं होगा। सो डेविएशन कैन बी ओनली 20% और 30%, बट द 60 to 70% of the questions they will be of same nature that were asked in the previous years. तो जितने लोग ऑप्शनल को प्रिपरेशन करेंगे इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब आपका ऑप्शनल की प्रिपरेशन। मैम हम स्टूडेंट को बता देते कितना कितना टाइम लग जाता है ऑप्शनल्स को, एंथ्रोपोलॉजी को आप बता दीजिए, फॉरवर्ड का मैं बता दूंगा फिर। And before that, for anthropology, it is more so. Like if you analyze the previous year papers, kind of, if you just have the previous year questions and the syllabus paper in your hand, it is something like some 90% of the new question paper is with you, because the scope of the subject is limited. It's not a vast subject. It also depends on the nature of the subject. And when it comes to the time duration, so these days I'm launching the courses of some around 4 months, and I believe 4 to 5 months. So I believe in the same, like along with the course, the preparation also will be completed. So that is the rough time taken for anthropology is 4 to 5 months. 4 to 5 months. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी लगभग 3-4 महीने में कवर हो जाता है, छोटा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। लाइक इन द स्टार्टिंग आई हैव टोल्ड यू, ये छोटे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं इन कंपैरिजन टू और बहुत बड़े बड़े ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उनके नाम हम नहीं लेते कौन से बड़े हैं, वो आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा। बट हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लगभग 3-4 महीने में कवर हो जाता है। ओवरलैपिंग भी है पॉलिटी के साथ, गवर्नेंस के साथ, एथिक्स के साथ, इंटरनल सिक्योरिटी के साथ, तो वो भी चीजें आपको काफी हेल्प कर देती है। मतलब आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है कि जीएस में भी यही पढ़ना है और हमें थोड़ा थोड़ा चीजें ऑप्शनल में भी पढ़नी है, तो ओवरलैपिंग में थोड़ा सा पुश जरूर मिल जाता है। मैम आपका मतलब जर्नी किस तरह का रहा है एंथ्रोपोलॉजी को लेके, इतने साल आपने पढ़ा दिया है, तो मतलब हाउ हैज बीन द जर्नी? Sir, I started teaching anthropology somewhere in the year 2012. Then I taught anthropology in Hyderabad for 1 year. Then after that, I moved to Delhi, and I taught anthropology in Delhi for around 8 years. So in the span of 8 years, I have completed some around 15 batches, because around 20 batches, because every year there are 2 batches, and in the last few years there were 4 batches per year also. Kind of around 20 batches I have done in Vajiram. Then after that I moved to Unacademy in 2021. So last 2-3 years I was with Unacademy, and here also I've done some around 5 batches of anthropology already. So this is my journey with anthropology, and this is also kind of a this optional can also be completed in 3 months, the teaching part, but kind of I will prefer to take it a little slowly, because I usually in my pattern of teaching I combine learning and teaching together. So that's why it will take some 4-5 months. Otherwise, if you are in hurry, so you can also do it in 3 to 4 months. That is about the time duration, sir. ठीक है मैम। लाइक when it comes to public administration, मतलब मुझे पढ़ाते हुए it's been almost like 14-15 years. तो I took my attempt in 2007. उसके बाद में I got selected in 2009 as assistant commandant, और उसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तब से पढ़ा रहे हैं, तो काफी सारे बैचेस हो गए। अनअकैडमी पे लगभग मुझे लग रहा है आई थिंक इट्स द 8th बैच, 8-9 बैच हो गया अनअकैडमी के ऊपर ही, और उससे पहले काफी सारे बैचेस पढ़ा लिए, 30-40 का क्रॉस हो चुका है लगभग टोटल ओवरऑल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मतलब स्टूडेंट्स को हम अपने बारे में इसलिए बता रहे हैं, या मैम बता रहे हैं या मैं बता रहे हैं
सो दैट अगर आप अनअकैडमी के ऊपर अपना ऑप्शनल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक ट्रस्ट होगा, मतलब इस चीज को जान के कि मैम ने इतने सारे बैचेस पढ़ा लिए या हमने इतने बैचेस पढ़ा लिए हैं, योर ड्रीम विल बी सिक्योर्ड। वो हम आपके जो ड्रीम है उसका एक इंश्योरेंस हो रहा है, आपको पता है यू आर कमिंग टू द राइट टीचर्स। आप उन टीचर्स के पास आ रहे हैं जिन्होंने काफी सिलेक्शंस भी दे दिए हैं और जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है और बहुत सारे बैचेस भी उन्होंने पढ़ा लिए हैं और उनको सब्जेक्ट्स के ऊपर मास्टरी भी है। मुझे लगता है मैम स्टूडेंट्स को ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है, so that students can trust the teacher and very true, they sir. will be more committed and they will be more committed with respect to the preparation of the optional subjects. In like in medicine also there is something called placebo effect. So Yes. like placebo is something which is just distilled water, but if Yes. that is injected the disease gets cured, because what Yes. is there in that, it is not plain water, it is trust. It's trust. Like students know everything. It means they should take the informed decision. Informed Should know that they are in safe hands. We should not know that they are in safe hands. So they must have the awareness that they are in safe hands. So I definitely feel you pointing out that is very important. I think this is important, and it's not about a teacher telling to the students that I have done so many and so many batches, but the purpose is so that they can feel secure, they can trust the teacher. They should take an informed decision. Important. Yes, and they can take informed decision. That is very, very important. Ma'am, anything more you want to ask or discuss? कुछ आपके मन में कुछ है, कुछ ऑप्शनल को लेके तो आप भी पूछ लीजिए। मतलब कुछ और किस और चीज के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं हम? What way, like public administration optional is related to the other GS papers, and should that be a very important criteria to choose an optional? Overlapping with GS, should it be a very important criteria to choose an optional? मैम मुझे पर्सनली लगता है किसी किसी साल में जैसे ऑप्शनल में मार्क्स कई बार फ्लक्चुएट कर जाते हैं, सो अगर ऑप्शनल में कई बार कम मार्क्स आता है, I think the knowledge, the information, the content that you have of that particular optional subject might help you to answer in a better manner with respect to quality, with respect to governance and ethics. तो वो कहीं ना कहीं compensation जो है वो कहता हूँ compensation कर देता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उस तरीके से। बाकी all the optionals are good. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी ऑप्शनल नहीं होगा जिसमें से सिलेक्शन नहीं होती होगी। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर ऑप्शनल में से सिलेक्शन होता है। अल्टीमेटली स्टूडेंट के ऊपर भी तो बहुत डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितना एफर्ट डालता है, बिकॉज मुझे लग रहा है अब जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अराउंड 1500 से आसपास 2000 के आसपास हम स्टूडेंट्स अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं अभी, तो एंथ्रोपोलॉजी में भी इतने स्टूडेंट्स हैं लगभग, तो उसमें से सिलेक्शन तो सबका नहीं होगा, सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होता है। तो किन लोगों का सिलेक्शन होता है? जो लोग बहुत एफर्ट मारते हैं, बहुत जान मारते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, रिवाइज करते हैं और बहुत डेडिकेशन एंड कमिटमेंट से पूरा कोर्स देखते हैं। बिकॉज मैं पर्सनली ये देखता हूँ, जिस दिन हम पहले दिन कोर्स स्टार्ट करते हैं वी हैव लॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो बाद में कमिटमेंट लेवल कहीं ना कहीं वो बीच में हिलना स्टार्ट हो जाता है। तो जब पेन आता है ना, व्हेन द प्रोसेस बिकम्स पेनफुल, particularly when it comes to this test series, when 100 students start writing, finally last exam only one student will write. Most of the students just join the test series. Yes, and ये बहुत मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही टेस्ट सीरीज को लेके कि जितने भी स्टूडेंट्स अब आएंगे, अगले बैच में आएंगे, पबेड में आएंगे, एंथ्रोपोलॉजी में आएंगे, प्लीज एक कमिटमेंट लेके जरूर आइएगा कि हमने टेस्ट सीरीज पूरा कंप्लीट करना है। बिकॉज स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है, टीचर मेहनत करा रहा है, टीचर का मेहनत कराने का भी तभी मजा आता है जब उसको पता है कि मैं कोर्स करवा रहा हूँ एंड सम स्टूडेंट इज फिनिशिंग द एंटायर टेस्ट सीरीज। बिकॉज जब तक आप टेस्ट सीरीज पूरा फिनिश नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली सिलेक्शन के चांसेस कम है। तो सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है टीचर को पेन होता है जब टेस्ट सीरीज कोई कंप्लीट नहीं करता है। तो इतने लोगों को पढ़ाया होता है और उसमें से टेस्ट सीरीज कोई भी नहीं कंप्लीट कर रहा है, और जब तक आप टेस्ट सीरीज कंप्लीट नहीं करेंगे तो सिलेक्शन तो फिर वो बहुत बुरा लगता है। तो एक कमिटमेंट जरूर लेके आइए आप। अभी इस क्लास को बाद देखने के बाद बहुत सारे लोग ऑप्शनल ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, कोई भी ऑप्शनल ज्वाइन करिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी करिए, बट एक कमिटमेंट जरूर रखिए कि मुझे टेस्ट सीरीज जरूर कंप्लीट करना है और मुझे कम से कम आंसर लिखने हैं। बिकॉज टेकिंग क्लासेस और वॉचिंग क्लासेस और डूइंग कोचिंग इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। उसके बाद में तो आपको सेल्फ रीड करना है, चीजों को रिवाइज करना है, फिर
सब्जेक्ट के कीवर्ड्स को मास्टर करना है आपको, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को पढ़ना है, फिर आपको टेस्ट सीरीज देना है, तो इट्स अ साइकिल, वो पूरा साइकिल है, तो वो जरूर कंप्लीट जरूर करिए, बिकॉज टीचर का मेहनत करा रहा है, आप मेहनत करेंगे, सिलेक्शन होगा तभी मजा आता है. Yes, sir. And if you do not complete the cycle, if you stop in the last step, the entire 1 year process is also getting wasted. उसका Yes, कोई फायदा नहीं है. you have better enjoyed with your friends or could have done something else instead of wasting your one complete year in this. If you do not complete the cycle, totally it is useless. So kind of take it seriously. And about that point which I was mentioning, personally, I believe if the optional is having some overlap with GS papers, it will definitely help, because like your time of preparation will come down, and you can use your GS knowledge in the optional knowledge in the GS. And public administration, anyway, we know that it is overlapping with many GS papers, and same is the case with anthropology also. It will overlap with GS paper 1 Indian society, GS paper 2 social justice, ethics and integrity, because we have some theories and some philosophical content also. And it will also overlap with essay, because most of the essays are from the social topics, and anthropology is nothing but a combination of sociology and biology. So, and it will also overlap with science and technology, some biotech portion of it. So anthropology is also having a good overlap with many GS papers. Yes, sir. मैम, मतलब हम स्टूडेंट्स को अवेयर कर देते कि हमारे लगभग कितने बैचेस आते हैं. सी व्हेन इट कम्स टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अनअकैडमी पे 3 बार बैच लॉन्च होता है पूरे 1 साल में. सो वन ऑफ द बैच इज पोस्ट प्रीलिम्स. अब जिस तरह 28 मई को आपका प्रीलिम्स है, 28 मई के बाद में इमीडिएटली बैच स्टार्ट हो जाएगा, 1 जून को बैच स्टार्ट हो जाएगा. मैम का एंथ्रोपोलॉजी का ऑफलाइन भी स्टार्ट हो रहा है इस बार बैच दिल्ली में, एंड आई थिंक दैट इज ऑन 5th जून आई बिलीव मैम. Yes, sir. We are announcing it on 5th June. तो एंथ्रोपोलॉजी का मैम का बैच 5th जून को हो रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1 जून को हो रहा है. उसके बाद में अक्टूबर में फिर बैच स्टार्ट होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, एंड अक्टूबर के बाद में देन अगेन द बैच, न्यू बैच कमेंसेस इन द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी. तो साल में 3 बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है. तो आप मतलब उस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कि मुझे कब करना है, मुझे जून वाले बैच में आना है, मुझे अक्टूबर वाले बैच में आना है, या मुझे जनवरी वाले बैच में आना है. तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड, एंड ऑप्शन का प्रिपरेशन पहले करिए, वो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट बना देता है. ओवरऑल प्रिपरेशन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है. डिले मत करिए, प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए. एंड बाकी मैम आप बता दीजिए ऑप्शनल आपका एंथ्रोपोलॉजी कब आ रहा है, सो दैट स्टूडेंट कैन मेक डिसीजन. I am also launching 3 batches per year. One in the month of June, when the academic year gets completed and the fresh students are joining. The other one in the month of October, so that they will complete the coaching roughly in the month of March, and they still have some 2 months left for exclusive prelims preparation. And one more batch is a crash batch, that is along with the test series, a crash batch along with the test series in the month of June, so that they will have a quick revision for the mains. And any students, if they missed taking coaching, accidentally cleared the prelims, so can have a quick completion of the optional and write the mains. So these are the 3 batches I'm launching per year, sir. चलिए ठीक है मैम. तो अब आपके बैच से हम भी क्रैश कोर्स का बैच लॉन्च करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का. मैम के बैच से आइडिया लग गया. तो मैम आई थिंक काफी चीजों के ऊपर डिस्कशन हो गया है. तो आई थिंक बुक्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, कितने ओवरऑल नंबर ऑफ बुक्स है, क्योंकि ये भी एक जो बिगिनर स्टूडेंट है वो भी पूछ लेता है पबमेड में कितनी बुक्स पढ़नी पड़ती है एंथ्रोपोलॉजी में. तो आप भी बता दीजिए, मैं भी बता दूंगा फिर बाद में. Sir, for anthropology there are many books, sir, and book list is available anywhere in Google, so like kind of I think I need not say them, but one thing is I am providing a detailed notes for them. So the notes include information from kind of all the sources, like they can openly compare the notes with any source that is available in the market, and they can finalize on. I mean, on this also, I want the students to take an informed decision. They should not go by, like Bindu Mam said, that the notes is enough. Not like that. Take the notes,
compare it with all the standard reference textbooks that the rankers are suggesting, or the other teachers are suggesting, or seniors are suggesting. Compare it. If the notes contains all the information or a little more information than those sources, then confine to the notes. So this is what is a kind of an open statement that I want to give. So I am giving a complete detailed material, which is kind of on the whole 90% enough for the exam preparation. And the other 10% comes from their GS preparation, because some questions are general in the context. Like, say, for example, they ask about Khap Panchayats. They're not mentioned in the syllabus, but in general, we know about them. Or they asked about ethnic media. Okay, means media run by one particular ethnic group, like a religious group or something. Ethnic media is not mentioned in the syllabus, but in the newspapers we get it. When we prepare for GS, we get it. So like 90+% from my notes, and the other 10% from the newspapers, like whatever they do for GS preparation. They don't have to do any current affairs exclusively for anthropology. If they thoroughly prepare for GS, they can deal with such general questions from anthropology as well. Yes, sir, that's it. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बताते हैं, मतलब हर ऑप्शन का अलग अप्रोच है. मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यू नीड टू रीड फ्यू बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. माय पर्सनल सेइंग इज अ टीचर कैन नेवर रिप्लेस अ बुक एंड बुक कैन नेवर रिप्लेस अ टीचर. दोनों इररिप्लेसेबल हैं. तो बुक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4-5 बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है. अरिबम है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए. लक्ष्मीकांत का बुक है आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको रीड करना है. मोहित भट्टाचार्य की किताब है, उसको रीड करना है. इतनी बुक्स सफिशिएंट है. प्लस उसके बाद में सेकंड ARC की रिपोर्ट्स हैं. एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इस तरह के बहुत सारे सिलेबस है जो जनरल सिलेबस टाइप टॉपिक्स हैं. ऑर्गेनिक से हैं कुछ ना कुछ टॉपिक्स जो बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स नहीं है. वो आप GS जब कवर करते हैं तो वहां से भी बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाती है, कंटेंट कवर हो जाता है. एंड स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स वो बहुत मदद कर देता है आपको पॉपेड के आंसर्स अच्छी तरीके से लिखने के लिए. तो बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, मैं समझता हूँ. छोटे ऑप्शनल्स हैं एंथ्रोपोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. एंड स्टूडेंट्स अपना दोनों ऑप्शंस के बारे में सर्च करके, मैम की क्लासेस देख के, हमारी क्लासेस देख के आप देख लीजिए, डिसाइड कर लीजिए. एंड आई जस्ट वांट टू कन्वे वन थिंग. अनअकैडमी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑप्शनल की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं. बिकॉज टेक्नोलॉजी वाइज जब भी आपको ऑप्शनल कुछ ना कुछ करना है, 2 बार देखना है, तो अनअकैडमी आई थिंक अलाउज यू दैट ऑप्शन कि आप मल्टीपल टाइम भी देख सकते हैं ऑप्शनल को. तो जितने लोग भी सिलेक्ट करना चाहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, थोड़ा और रिसर्च करिए, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए. बट डू स्टार्ट ऑप्शनल प्रिपरेशन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन. उसको डिले मत करिए, उसको लंबा मत खींचिए कि 6 महीने के बाद प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑप्शनल का, 8 महीने के बाद कर रहे हैं. तो फिर प्रिपरेशन करने का मजा आता नहीं है स्टूडेंट को. उसको ऐसे लगता है कि मेरी प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं हो रही है. तो जल्दी करिए एंड बी अ गुड एंड सीरियस एस्पायरेंट एंड सिलेक्शन लीजिए एंड पूरा साइकिल जरूर कंप्लीट करिए. ठीक है, मैम का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एंथ्रोपोलॉजी में. मेरा भी ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आया हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन JRF इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो अनअकैडमी और भी ऑप्शनल के टीचर्स हैं. मतलब ऐसे ही नहीं है कि वो एंथ्रोपोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अगर आपका मन कोई और ऑप्शन लेने को भी कर रहा है, आई थिंक यू शुड डू अ प्रॉपर रिसर्च कर लीजिए. आप अपनी स्ट्रेंथ देख लीजिए, अपनी वीकनेसेस देख लीजिए, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए ऑप्शनल. तो बस मैम आई थिंक. Sir, regarding books, what you said is also very true. It probably depends very much on the subject. For example, if it is a public administration, of course, a teacher cannot teach the total constitution to them or some reports to them. The nature of anthropology is different. It's different, obviously. Obviously. It's a general social and biological kind of subject. So for which there is a kind of defined syllabus that can be given like a material, like some source notes or information, whereas the nature of public administration is totally different. Okay, so and one more thing, sir, what is your opinion about this online offline debate that is constantly going on among the students and among the faculty members also? Which is better in your view? मैम मुझे तो काफी साल हो गए पढ़ाते हुए. इट्स बीन लाइक 13-14 इयर्स. तो
मतलब इन सालों में मैंने दोनों फॉर्मेट में पढ़ा है, ऑनलाइन भी पढ़ाया है एंड ऑफलाइन भी पढ़ाया है. बट आई पर्सनली बिलीव a teacher can convey the content in a better manner when we are delivering it online. Exactly. This is what I personally believe. Yes. And I don't think that while delivering a lecture in a classroom we can deliver it in that effective a manner Yes. the way we Like- are delivering it on online. My experience is I taught in 3 formats: offline, online live, and online recording. Recorded I have also done. So like I give the first rank to online. Online. Now, as sir informed, I'm starting offline classes in Delhi. Still, I'm standing by that same sentence, that is online live is the best. Online live is the Like best. the students can immediately ask the doubt. The students have a greater contribution in an online live class. Yes. So they can keep sending the messages, they can ask a doubt immediately, they can interact, they can talk to the educator, and they can watch the class one more time. Okay, or some 10 minutes they got distracted, the thought process went to something else, they missed what the teacher taught. That 10 minutes they can timestamp and watch it again. So like this, there are so many. And in a classroom, in a crowded classroom, some 20 to 30% of the students could not even properly look at the board also. That was my online experience. So I would no doubt give first rank to online live, second rank to the offline, and I don't want to give any ranking to the recording. I just hate recorded classes. बिल्कुल मैंने जब क्लासेस कभी करी है, लाइक आई डिड नॉन मेडिकल, तो उस समय में फिजिक्स केमिस्ट्री के जब भी क्लासेस करते थे तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई बात सुनी नहीं है टीचर ने कुछ बोला है एंड आई वाज नॉट एबल टू हियर इट, और वो पूरे का पूरा सिस्टम कंसेप्ट 15 मिनट 20 मिनट ऐसे ही निकल गया. एंड कई बार ऐसा भी होता है कि मूड नहीं है पढ़ने का, आज जाना नहीं है, क्लास लगानी नहीं है, सो देयर इज अ ऑप्शन, यहाँ पे आप दोबारा से वो क्लास को कर सकते हैं. तो वो वाली ऑप्शंस पहले नहीं थी, चलिए आज ऑप्शंस है, बट ऑनलाइन डेफिनेटली इज मच बेटर, वे बेटर. इट इज मोर एफिशिएंट, मोर इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल टू. सस्ता भी है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज इतना ज्यादा खर्चा होता है दिल्ली आके, एंड वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आई थिंक ऑफ प्रिपरेशन. Pressure increases, psychological pressure increases when we are spending so much money on rent. Because staying in old Rajendra Nagar, it costs a hefty amount, and 20-20 हजार रुपए के कमरे हैं, खाना अच्छा नहीं है. So yes, online is definitely but better. Sir, I think we have to change one point. Like Unacademy is offering paid coaching for the students who cleared the prelims. Oh, So that's yeah, really this is also a very good initiative. Yeah, Unacademy is taking good care of students. And one more thing, like before when I was in Bajiram, so at that time it was only offline and there are not so many institutes also. So the students used to stand in a queue for some around half an hour before the class. Yes, ma'am. Half an hour before the class, when they are in the queue, okay, if something happens, some call and a little quarrel with a friend or something, mood off, half an hour queue mein kade hoke, like after attending the class you did not get any information, but if it is online you can just watch it again, you need not miss any content. So this is the reason, though I am planning to take offline classes again, I still stand by the statement that online live is the best. जी मैम. चलिए, आई थिंक स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट हो गया होगा इस इंटरेक्शन से, और भी इस तरह के हम सेशन करते रहेंगे. चलिए मैम, ठीक है. थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग दिस सेशन, एंड आफ्टर वाचिंग दिस सेशन यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. आपको ऑप्शनल जल्दी स्टार्ट करना चाहिए एंड कौन सा ऑप्शनल लेना, थोड़ा और रिसर्च कर लीजिए. चलिए मैम, एनीथिंग मोर यू वांट टू से? Nothing, sir. Thank you so much, friends. चलिए, ओके, बाय बाय. Students, Unacademy is coming up with optional carnival this Saturday and Sunday. So this Saturday and Sunday, I will be discussing the strategy on public administration optional. So I request all the aspirants to do watch this class on public administration, and public administration optional की strategy जरूर देखें. इससे आपको पता लगेगा कि ये सबसे छोटा optional है और बहुत जल्दी cover हो जाता है. So I invite all of you to attend this optional carnival and do attend public administration strategy class.